नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितिन खन्ना है और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज का मेरा वीडियो है इस पॉइंट पे कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट जो है वो अपनी प्लेंट के साथ, डब्ल्यूएस के साथ, रेप्लिकेशन या रिजॉइंडर के साथ आपने फाइल नहीं किया है और दूसरी पार्टी की गवाही स्टार्ट हो गई, तो क्या आप वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? वो किस सिचुएशन में आप एग्जिबिट करवाएंगे? फॉर द फर्स्ट टाइम आप क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर वो डॉक्यूमेंट पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यही मेरा आज का वीडियो है। तो मैं आपको ये सब जजमेंट के द्वारा बताऊंगा कि किन सिचुएशन के अंदर वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे आ सकता है और आप बाद में अपनी गवाहियों के अंदर भी वो डॉक्यूमेंट प्रूव कर सकते हो। तो वो परमिटेड तो है, लेकिन किन सिचुएशंस में परमिटेड है? कोर्ट कहती है कि ओवर स्मार्टनेस नहीं चलेगी अगर आपने पहले नहीं फाइल किया। लेकिन अगर आप जेन्युइनली डॉक्यूमेंट पुट करना चाहते हैं और वो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है उस विटनेस के लिए, तो आप फॉर द फर्स्ट टाइम आप वो डॉक्यूमेंट फाइल कर सकते हैं रिकॉर्ड पे। वो डॉक्यूमेंट अगर एडमिट हो गया तो एग्जिबिट भी होगा, और अगर एडमिट नहीं हुआ तो भी वो रिकॉर्ड पे जरूर आएगा, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे, क्योंकि आपने वो डॉक्यूमेंट पुट किया है तो इसलिए रिकॉर्ड पे आएगा। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड से वापस हो जाएगा और वो डॉक्यूमेंट कभी पढ़ा ही नहीं जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो क्या जजमेंट है? ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है, वही आज का मेरा वीडियो में आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप मेरे चैनल पर आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, आपको ये तो पता होगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ओरिजिनल, आपको कोर्ट में जब आप केस फाइल करते हो आपको तभी फाइल करने होते हैं। और अगर आप डिफेंडेंट हो या रिस्पोंडेंट हो तो जो आप अपना डब्ल्यूएस देते हो या जवाब देते हो आप, तो आपको साथ में सारे के सारे डॉक्यूमेंट फाइल करने होते हैं। कुछ रह जाए तो आप रिजॉइंडर या रेप्लिकेशन के साथ फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो चीज ट्रायल प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले आपको सारे ओरिजिनल फाइल करने होते हैं। यही आपको सारा प्रोसीजर पता है और ऐसा ही आप करते आए हैं। लेकिन ये मेरा वीडियो उस चीज पे है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने फाइल नहीं किया, कोई डॉक्यूमेंट रह गया, या आप जान के फाइल नहीं करना चाहते क्योंकि आप विटनेस को सरप्राइज देना चाहते हैं कि मैं ये तेरे को पहली बार एविडेंस के अंदर पुट करूंगा डॉक्यूमेंट, ताकि उसका जवाब ना दे सके या कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि विटनेस को क्रॉस एग्जामिनिंग करना बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, आपको अपने फेवर की बात लेके आनी होती है। तो वो आप काम कर सकते हैं, वो आपको मैं सीधा जजमेंट के थ्रू ही दिखाता हूं, बिना टाइम वेस्ट करे आपको सीधा जजमेंट पे ही ले चलता हूं। आइए देखें वो जजमेंट क्या कहती है। तो दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है राकेश कुमार वर्सेस पवन खन्ना, 29 जुलाई 2015 की जजमेंट है, ये आप नोट कर लें। This petition raises question of general importance arising frequently in trials. The question can be framed thus. पहला क्वेश्चन, what is the challenge fate of the documents produced for the first time during the cross-examination of a witness and which are denied by the witness? Whether the said documents are required, retained, kept on the record file, or merely because the witness has denied the document, the same has to be returned to the party which has produced the same. If the said documents are to be kept on record, retained, what is the status thereof? उसके बाद तीसरा, whether a party producing the said documents can prove the same at the stage of his own evidence or for the reason of not having produced it along with plain written statement and having chosen to use it only during cross-examination, is then barred from treating the document as own document and proving the same. Since I am unable to find any judgment completely considering the aspect, and further since, in my opinion, these questions plague the courts on a daily basis, it is deemed appropriate to answer the same. अब इसके बाद इन क्वेश्चन का आंसर देंगे कोर्ट। Order 7 Rule 14(4), Order 8 Rule 1A(4), as well as Order 13 Rule 1(3) provide that provisions requiring the parties to file documents along with their pleadings and or before the settlement of issues do not apply to documents produced for the cross-examination of the witnesses of the other party. To the same effect, Section 145 of Indian Evidence Act also permits document to be put to the witness, though it does not provide whether such document should already be on court record or can be produced shown for the first time. However, in view of unambiguous provisions of the CPC, it cannot be held that document cannot be produced shown for the first time in cross-examination. If the witness to whom the said document is put identifies his handwriting, signature or any writing, signatures of any other person on the said document, same poses no problem because then the document stands admitted into evidence. However, the question arises as to what is the course to be followed if the witness denies the said document. Is the document to be kept on court file or to be returned to the party? This question also, in my view, is also not difficult to answer. It cannot possibly be said that
the document should be returned to the party. If the document is so returned, it will not be possible for the court at a subsequent stage to consider as to what the document was put and what was denied by the witness. In a given case, it is possible that the answer of witness on being confronted with the document may not be unambiguous. It may still be open to the court to consider whether on the basis of the said answer of the witness the document stands admitted or proved or not, and or what is the effect to be given to the said answer. Thus the document cannot be returned and has to be necessarily placed on the court file. इसका मतलब डॉक्यूमेंट वापस नहीं होगा. The next question which arises is that if the document is so placed on the court file, whether it is to be treated as the document of the party producing the same, and is that party entitled to prove the said document notwithstanding having not filed the same earlier as required by law, or the use of the said document is to be confined only to confront the witnesses to whom it was put, and it cannot be permitted to be proved by that party in its own evidence. The legislative intent behind Order 7, Order 8 and Order 13 appears to permit an element of surprise, which is very important in the cross-examination of witnesses. A litigant may well be of the opinion that if the document on the basis whereof he seeks to demolish the case of adversary is filed on the court record along with the pleadings or before framing of issues with resultant knowledge to the adversary may come prepared with his replies thereto. On the contrary, if permitted to produce document owing to element of surprise, the adversary or witness may blurt out the truth. Once it is held that a litigant is entitled to such right, in my view, it would be too harsh to make the same subject to the condition that litigant would thereafter be deprived the right to prove the said document himself. Thus, if witness to whom the document is put in cross-examination fails to admit the document, the party so putting the document in its own evidence would be entitled to prove the same. However, the same should not be understood as laying down that such party for the said reason and to prove the said document would be entitled to leave evidence which otherwise is not entitled as per scheme of CPC and evidence law. For instance, if the document is shown by the defendant, the plaintiff's witness, and the plaintiff witness denies the same, the defendant can prove the document in his own evidence. Conversely, if the plaintiff puts the documents to the defendant witness and the defendant witness denied the same, the plaintiff, if entitled to lead rebuttal evidence, would in his rebuttal evidence be entitled to prove the same. However, if the plaintiff has no right of rebuttal evidence in a particular case, the plaintiff would not be entitled to another chance to prove the document. In such a case, the plaintiff has to make a choice of either relying upon the surprise element in showing the document or to file the document along with its pleading and or before the settlement of issues and prove the same. I may, however, put a line of caution over here. It is often found that the party which has otherwise failed to file documents at an appropriate stage attempts to smuggle in the documents the evidence of the witnesses of the adversary by putting the documents to the witness, whether relevant to the witness or not. The court should be cautious in this regard. The case of the petitioner has been examined in the light of the above legal position. The petitioner tenant has a right to cross-examine the respondent landlord and being not precluded from confronting the witness in the cross-examination with the documents which are not on record. The impugned order hardly causes any prejudice to the petitioner. What will be the effect of denial of such documents by the witness which have been confronted with during the cross-examination? Stand answered in Subhash Chandra case Supra. तो देखिए, मैंने आपको जजमेंट दिखाई, आशा करता हूं उससे आपको समझ आ गया होगा कि किन सिचुएशन के अंदर आप वो काम कर सकते हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम आप डॉक्यूमेंट कब दूसरे विटनेस को दिखा के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, रिकॉर्ड पे ला सकते हैं, एग्जिबिट भी करवा सकते हैं. एग्जिबिट ना हो तो कम से कम रिकॉर्ड पे जरूर ला सकते हैं और बाद में अपनी गवाहियों के टाइम पे प्रूव कर सकते हैं. यही मेरा आज का वीडियो था. आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताएं आपको वीडियो कैसा लगा. और हाँ, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. आज का वीडियो इतना ही. धन्यवाद.